Hello. Are we live? Are we live? Are we live? Wait. Something is wrong. Very, very wrong. No, nothing is wrong. Everything is fine. I hope my audio is coming. Let me check. Okay, audio to audio. भाई आज स्नेजनाया की स्ट्रीम हो गई. किसने सोचा था? यकीन हो रहा किसी को? मुझे तो नहीं हो रहा. आज 24 तारीख है ना? यस, आज 24 तारीख. लेकिन स्ट्रीम स्टार्ट कब हो गया? आई थिंक 5 या 5:30. आई होप सो. अभी तो चैनल में कुछ नहीं दिख रहा है. स्ट्रीम क्या मतलब टीवी. एक काम करते हैं, क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. मैं थोड़ा ग्राफिक ऑप्टिमाइज कर लूँ यार. ऑप्टिमाइज है आप पहले से इस बार. अभी ठीक है. Can't load it. Okay. Fill me in. What's the situation? We ran into resistance almost as soon as we set off. Albedo said we should split into 2 teams and continue searching while he and the others kept the Wild Hunt occupied. Good call. Locating the wolf spirit fragment is our key objective. I would have made the same decision. Well, it seems the enemy figured as much too. Now, both search teams are in big trouble. Before we ran into trouble, this is the search area we decided on. The 2 teams are holed up here and here. They should have a clear idea of the fragment's location by now. But the Wild Hunt is stopping them from relaying messages back, right? Do we have any more troops available to provide back? We can't spare troops from any of the fronts right now. That just leaves us with... The logistics company is standing by. Hanefa! Designated drop point reached. Initiating situation report. The logistics company was assisting Aino with the production of the strategic reserve. But after learning of the situation on the front line, they requested to be dispatched immediately. They are currently nearby awaiting orders. Amazing. Just in the nick of time. Hey, seeing as you can fly and all, shouldn't you be the one out here delivering messages? I regret to say that without the workshop's catapult, and with my short-distance propulsion module on cooldown, I will only be able to return to the battlefield after another 5 minutes. Please,
Keep up the good work, Yehoda. The logistics company has very limited provisions, only enough for a single battle. Which team should they support? Both. Once one team has been rescued, the remaining forces will be free to support the other. We'll... Sure thing. Leave it to me. Both. Once one team has been rescued, the remaining... Logistic squad carrying a large cache of explosive. Varka can command them to set ambushes using that terrain to strike enemy units that have strayed from their group. Okay, तो मुझे क्या करना है? Hello. Carrying a large cache of Varka can command them ambushes using the terrain. अच्छा मैं वारका की तरफ से खेल रहा हूँ. Enemy units. Enforcement for the lightkeeper. It's a wild hunt! Come on, let's go help! Something's not right. The Wild Hunt's offensive doesn't seem to be getting any weaker as the battle goes on. Are they getting reinforcements from somewhere? Don't get dragged into the enemy's rhythm. Logistics company, scout out the area. Look for terrain we can use to our advantage. Yes, sir. Reporting in, sir. We've identified viable sites for deploying explosives. Good. Wait for my signal. Logistics company, deploy. भाई ये क्या बकवास है? कौन से फाइट ज्वाइन करूं ये ना? Grandmaster! Honorary Knight! Thank goodness you're here. Be careful. There's no end to these monsters. However many we kill, more keep coming. Look at this icon. Well, they're about to get a shock to the system. We'll wipe them out faster than they can replenish their numbers. We just have to hold on until the logistics company is ready. Maria sweeping in! Is that the signal to say they're ready? It's showtime! Fall back! Yes, sir. Turn! Off the engine! Thunder! Thunder! Off the engine! Maria sweeping in! Off the engine! Thunder! Thunder! A new dawn rises! That's gonna leak. Thunder! Maria sweeping in! Off the ante! Thunder! Ah! भाई दो ट्रैवलर मेन कैरेक्टर लड़ रहे हैं. Time to get serious. मुझे बस वहाँ जाना है. तो पता नहीं मैं क्यों नहीं जा रहा. मुझे आ रही थी वार्ता से खेलने में. Maria sweeping in! Off the ante! On me.
तो एनर्जी रिचार्ज फिर कर लेते हैं और चलते हैं। Up the ante! Ready? Fire! इस अपडेट में तो भाई पायलट ट्रैवलर की आवाज भी आ The रही enemy है। has sustained heavy casualties. Should be a while before they're strong enough to pose a real threat again. Use this time to catch your breath and fill me in on everything you've learned. Yes, sir. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. That's not exactly very narrow. We split the search area between us and the Retniki. Maybe they'll be able to narrow it down further? Either way, I was about to go lend them a hand next anyway. Do you think you guys can keep up? Absolutely. Good to go, Grandmaster. We've run right through our supplies. We'll stay here and deal with any wild hunt that tries to stage a comeback. Now that they've lost their numerical advantage, they're no match for us. Focus on supporting the other team. The logistics squad had exhausted its tactical reserves and he has decided to remain here. Okay. अरे ये तुमने ऑप्शन दिया ही क्यों जब है? अजीब हरकतें करते हैं। Looks like the same situation here. They just keep coming, wave after wave. Reinforcements. Hey, you keep them busy while we work on getting rid of this god-awful mist. Understood. Everyone got that? It's up to us to hold them off. Yes, sir! Scorch and burn! Up! Up the ante! Thunder! Up the ante! Burn! Up the ante! Up the ante! On me! Hey, they're running out of steam. Now's your chance. Affirmative. Sorry to keep you waiting. That's their source. It was hidden and missed. If we destroy that, the Wild Hunt won't be able to summon any more reinforcements. Knights of Favonius! Charge! Scorch and burn! Burn! Maria sweeping in! Ooh, I'm glad that's finally over. Brave Knights, on behalf of the Lightkeepers, I thank you for your assistance. There's no need to be so formal. When it comes to the Abyss, we're all in this together. Now, please tell me everything you've learned. Very well. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. Yes! Now it feels like we're finally closing in on our target. I'll say. We're sure to face fierce resistance from the Wild Hunt, though. Is everyone willing to keep fighting with us? It would be our pleasure, Mr. Varka. Much obliged. All right, the target is just up ahead. Move out! तो इधर इधर जाना है ना? Again, that's pretty cool. The hiding in the mist trick again. These These guys must be easily amused. You all know the drill. The Knights of Favonius will engage the enemy while the Lightkeepers dispel the mist. Everyone, follow my signals.
Yes, sir! Up the ante! Lightkeepers, prepare to dispel the mist. Burn! Thunder! Thunder! Knights of Favonius! Charge! On me! लाइट की परफेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगी है सच बताऊं। वो मेरा नेट गया। क्यों भाई क्यों? Time to counterattack! Thunder! Burn! Up the ante! Scorching force! Thunder! Rally to the Grandmaster! Charge! Ugh, this wild hunt doesn't know when to give up. वार्का जी go on ahead. Traveler! Mr. Varka, leave this to us. Just like last time. Only a Knight of Boreas can deal with a wolf spirit, right? Don't underestimate us, Grandmaster. We can hold And our I'm own. here to now hurry up and go. Ha, that's the spirit. Stay on your toes and make the Knights of Favonius proud. Either we all march back to Mondstadt together, or no one does. भाई बोरियस से फाइट हो गई। करप्टेड बोरियस से। The final fragment is right there. Don't let me down. It seems you have collected them all, Knight of Boreas. Yeah, and with no corrupted fragments or ambushes along the way. I have to commend your chivalry, Sir Roland. A true knight does not resort to underhanded tactics. Were this body not a false one created by the Wild Hunt, nor would I countenance those monsters to taint our duel with their presence. If you need a moment to rest, take it. Victory will be mine, regardless of whether the path to it is the one I would wish for. Save your breath. If you want to fight, let's fight! As you wish. Then let us settle our unfinished duel, here and now. Let's go भाई अब वार्का के स्टोरी का इसमें बहुत फाइट है। Is everyone all right? My granny fights better than these rookies. It's Egbert I'm worried about. You still alive? For a moment there, I thought I might never taste the sweet wine of Mondstadt again. Hey, stay put, you guys. Leave the rest to us. Forget us. We can take care of ourselves. You're the only one still standing. Honorary Knight, find the Grand Master. We can't lose our Varka. Please, you have to find him. वार्का, I hope your plan is still gonna work. You're holding back, Knight of Boreas. I can tell. You do not wish to strike me down. This duel does no justice to the way of chivalry. I wield the power of a god, while you dare not swing your sword with true intent. If you continue on this path,
You will die. Your plan is doomed to fail. Your plan How has can a reached an helpless lamb impasse. hope to take Now the it falls heart to of a me wolf to create new when rules a for wolf that has land. seen through the lamb's plan? But before the dawn of a new age, the old must You're be on to me destroyed. already, huh? Andreas's question, Boreas's answer, the means to bear a soul. I knew it all 500 years ago. Though the false path may be wide and welcoming, भाई मैं नेमिंग से only कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं नाम destruction याद नहीं हो रहे इन lies at सबके. its end. कौन It is कौन है, time किसका नाम to क्या है. crush your futile hope. ठीक है, ये तो मेरे समझ आ गया, ये रोलैंड है. तो फेल हो गया. अरे यार. It's over. Your sword lies shattered. The wolf spirit and the I think thoughts you यही था part blindly two placed का. your faith in have nowhere left to dwell. Join me and pledge your allegiance to the abyss, Knight of Boreas. One day you will understand that the only righteous path for those of true virtue is the path of darkest truths. For the next part, it's over to you, Outlander who caught the wind. Yeah, Descender. Ignite your fire. The sword is unbroken, but I can't sense the wolf spirit. Looks like I'm no longer in reality. This must be a space built from the entangled consciousnesses of Boreas and Roland. There's no way back. And all that lies ahead is the wolf's maw. Huh. Guess the only way is through. अरे जरूरत नहीं थी यार वैसे ही करने की. पता नहीं क्या कर दो यार. होगा इसका कुछ प्लान. On me! पर अगर भाई ये मर जाता वहाँ पे तो क्या होगा. The Favonius sword. Who left this here? पवोनिया स्वॉर्ड के लॉर्ड पता चलेगी लगता. पहले मैं खुद लॉर्ड पढ़ना चाहूँगा एक बार. पवोनिया स्वॉर्ड. Hello. Details. The Knight of Favonius, when you are armed with this challenge, your weapon. Channel the power. अरे ये नहीं यार. Yes. Standard longsword wielded by the Knight of Favonius. It is usually only issued after the approval of both the masters of the order and the chief the craftsman in monster have achieved some. भाई मैं पानी पी लूँ पहले. Stood upon a night phone also fruit of the hard work and skills. Can channel elemental power with ease. It's peer better. People remember that short blade is intended for defending, not attacking. It's only by line of flight. His name was Rostam. Oh भाई connected है ये लोग. भाई legend says भाई क्या यार यकीन नहीं होता कई बार तो 1.0 से है ये गेम के स्टार्टिंग से और अब 5-6 साल के बाद के सीन आता है वो लोड का. Legends say he could chop each drop of rain out of the sky and that the wind from his sword dance could split the rose and extinguish the torch rain out of the sky. The fire essence of one has been light, swift, and precise in the defense of monster. At age 27, Rostam received the title of Wolf, a Knight of Favonius traditionally dictated that titles of lion and such individuals will one day is in the position of grandmaster, devoting themselves to leadership of a multitude of knights and the safeguarding of monster. But what he fulfilled his duties faithfully and devoted himself to Mondstadt. Rostam will not live to see that day, since Rostam introduced the blade work style. No other
practitioner has ever matched his legendary ability, but his fervor, along with Alberta Monster, have stirred the knights throughout the generation. Lonely warrior, take me to see him. Hello? On me! No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. I have aided the oppressed and righted many wrongs. I have slain sinners and delinquents. I have slaughtered tyrants and demons. But however mighty one's blade, ये दोस्तों मैं ना the great injustice of fate, a mere mortal can but bow their head. There is only one way to save them. Who are you really trying to convince? Stormwind! Maria sweeping in! Stormwind! Stormwind! Is this the fairest shadow? The title of Boreas must find an heir. On me! The scent that reeks of blood appears to be getting stronger. Looks like I can just jump right over these obstacles. Here. On me. No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. Even the most fearless hero cannot fight what fate has ordained. And even the holiest god cannot escape the shackles that bind them. Lupus Boreas, if you still harbor love for humanity, then you must surely know. There has only ever been one way to save them from injustice. Surrender. ओके लूपस बोरियस है जो रोलैंड है और एक एंड्रियस बोरियस है जो मॉन्स्टर में आए थे और हम नाइट ऑफ बोरियस हैं ऐसा कुछ है लोड ही नहीं था बस भाई यहाँ कोई अलाइनमेंट नहीं है तुम पुश करने के लिए On me. Maria sweeping in! Stormwind!
Stormwind! On me! My old friend. This is not where your path ends. You must continue on. This wind feels less than welcoming. I'd better take shelter. एक रास्ता में एक रेवनवुड है और एक वांडरिंग नाइट लाऊंगा। Try to keep up. हाँ क्यों? अरे चीटिंग I चीटिंग। can't hide from it. You must deliver it. भाई दोस्तों मैं हेल्प कर रहा हूँ। Your path cannot end here. You draw near to the heart of the wolf. ओए Even if you had an army of 10,000 men, in the end, you must face this fight alone. Lonely warrior. Step forward. भाई इसे बंद करना होगा। Is this the heart of the wolf? स्ट्रीम भी तो स्टार्ट हो रही होगी। अभी तो 4:30 मुझे लगा 5:30 होगा। अभी टाइम है, अभी टाइम है। मैंने सीन नहीं Roll it! देखा। After countless bloody battles, trials, tribulations, and hardships, I, with my mortal flesh and blade, attained power to rival that of the gods. But you know better than I that a mortal's prime is fleeting. In 5 years, maybe 10, age will snatch your strength. The power you take such pride in will fade to naught, disappearing like dust in the wind. Your fame will be as fleeting as firewood beneath the starry sky, lit at dusk, dead by dawn. Utterly insignificant. Oh yeah? Be that as it may, the fires that burn down here blaze more brilliantly than the light of 1,000 stars. अगर दिमाग खराब They है तो blaze for भेज but a moment. 100 years from now, your earthly flame will be long snuffed out. And those you once illuminated will be left cowering in the cold and empty night. Ha! No. They'll remember me in 100 years, just as I उल्टा ही remember all जाता हूँ of मैं you तो हर from बार। centuries ago. That's the thing about firewood. From the embers of a dying flame, a new fire arises, burning bigger and brighter than ever before.
is to save others, not demand things from them. How can one call themselves a knight while placing their hopes in generations to come? Well, as long as I put an end to you here and now, I won't need to rely on anyone else. Now, show yourself, Roland! Put an end to me? Your body and mind are already at the limit of what they can bear. It is only a matter of time before they yield and crumble. But if this is your final request... I shall do as you wish. Knight of Boreas. Huh. You're not quite how I imagined you. You don't seem half as crazed as the memories contained in the wolf spirit. Not once have I strayed from the righteous path. But when I look at you, I do not see a hero capable of slaying dragons. Just a lost soul who has wandered far too long. A shadow of the knight you once were. I guess we have that much in common. Neither of us are at our peak. The Rayhir of Solmari's forces have been defeated. And the Roland you see is but an imperfect image cast by the Abyss. I wield the power that Roland did at his peak, but my heart and mind remain frozen in that blood-stained moment. Therefore, I, in my current form, am flawed. A knight cannot bear their own stagnation. After redeeming you from injustice, and guiding your surrender to the Abyss, I shall rectify myself, and continue to follow the knightly path. Huh. The world out there can bear no more of your torment. Your obsession, clearly, remains exactly as I had imagined. I suppose there's no chance to make you see the light. No words can make a knight doubt his convictions, no matter how noble they may sound. Neither of us will sway the other, but you have long known this truth. Otherwise, why would you pin all your hopes on Boreas' single thought? But now the blade that once housed the wolf spirit has been shattered, and all you hold is a phantom that bears its form. You no longer have the means to change the situation, and no one will come to your rescue. This place shall be your graveyard, lonely warrior. Huh. Maybe you're partly right. But I think I might just have a shot at a rescue. What do you mean? There's only one person's mind I need to change, and it isn't yours. Forgetting where we are? This is the heart of Andreas, god of the North Wind. Andreas! Can you hear me? Wake up! You are the great god of the North Wind! How long will you allow yourself to suffer the domination of the Abyss? If this is your final gambit, I am most disappointed, Knight of Boreas. Grand displays of heartfelt wishes cannot summon miracles. This world shows no such mercy to its inhabitants. Return. Return to the ley lines. This is my choice. My memory. Is this the answer that I found at my journey's end? Andreas, at long last, I have delivered your token back into your heart. A Knight of Boreas. Watch on. This is all that a wolf
can hope to do for humankind. On behalf of all humanity, I thank you, Lord of Wolves. Boreas is returning to the ley lines. But why? Your sword is broken. You no longer have the means to bear his soul. Unless... surely not. Begging for miracles is a futile endeavor. I know better than that. But a sword is just one kind of vessel. There are other ways to store a soul. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. Even if it is not my intention, the soul of Lupus Boreas will inevitably ravage, devour, and assimilate a mortal heart. As if human and wolf were being forcefully merged into one being. If a mortal heart is to bear the soul of a Yeah, god, the captain. this is a path that cannot be retraced. Yet, I shall not dissuade a knight from embarking on the quest of his own choosing. Your heart, your soul... they are collapsing. Now I see. You were wondering how a lamb could tame the heart of a wolf. Isn't that right? Here's my answer. You get the wolf to swallow the heart. The wolf spirit within the sword was merely a decoy. The true thoughts and memories were carried within your heart. To avoid arousing my suspicion, you deliberately allowed Lupus Boreas' soul to assimilate your own, then be devoured by me. But how did you have the strength to fight while bearing such a great burden? Compared to Lupus Boreas' decision, my sacrifice is nothing. You have a stubborn will, and employed an exceptional strategy. But this is not the way a true knight fights. The choice you have made is a flawed one. Your soul is now merged with that of Andreas. When he fully joins the ley lines, you too will fall. Neither Barbados nor the Traveler will be able to anchor your soul from within the ley lines, let alone rescue you. You have lost, and so have I. Regrettably, I can no longer offer you salvation. May your soul rest in peace with Boreas, lonely warrior. Haha! Lonely? Sorry to disappoint you, but as much as it sounded like the perfect ending for both of us to return to the ley lines together, the fact is that, unlike the true Roland of the past, I still have fine wine and good friends to get back to. They're looking forward to my triumphant return. I'm not ready to accept my fate just yet. Ding dong! You've got mail! Until I return, I leave them in your care. The Knights of Favonius will always welcome you. Come on! Come on, Stat! Dear Grandmaster. To Varka. To Varka. Family. No pig call. ऐका कट से ना बढ़ेगा.
poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. Make sure they all get delivered, Outlander who caught the wind. Grandmaster. Master. Varka. Varka. Uncle Varka! He's the right to us! For Varka. The thoughts of others anchor you, reversing the assimilation. Using your connections, relying on outside help. This is not the way of a knight. The Abyss can sustain me no longer. But now, countless souls who died unjustly will emerge to prevent your return. If you believe in your path, then grant them release. Carve your way out through bloodshed. Varka, mightiest knight of Boreas. This is how it ends. Throw the plan out of the window. Fight my way to victory. Well, that suits me just fine! वार का भाई असली मेन कैरेक्टर लगता है. A knight is always true to their word. So please, keep your promise and return victorious. भाई You are not alone. वारका का ट्रेलर का उसको म्यूजिक. Right back at you, Varka. Burn. ओके मैं भागना है. Guide you on your journey home. Leave it all to me! There's an ice-cold drink with your name on it. Ready when you are. Don't go dying in a place like this, Varka. बच गया भाई. एक भी मर जाता ना, नहीं गेम खत्म था. Fly home to us, Grandmaster! Fun. Spread your wings and soar toward a new dawn. Fate's chosen Lupica. But I think this is one of the best historicals. कोई डाउट ही नहीं है.
Walk forward and do not look back. Varka, now I know the meaning of my name. After the lengths you've made everyone go for you, you'd better make sure to thank us all properly when you get back. You know, I have a lot of things to update you on, but they can wait until you're back. I have no intention of returning to the Knights of Favonius, but I trust you will find a way to manage on your own. Grandmaster, we're all waiting for you. Oh. I'm not doing too bad a job as Grandmaster, am I? I'll take that silence as your approval. Everything you swore to protect with your lives, it's all still here, safe and sound. The Knights of Favonius, Mondstadt, and the oath sworn by every knight. I'll protect them all with my life. And so, I'll deliver that letter on your behalf. I know it's just a shadow of the real Roland, but if you have the time, could you please read it for him? Rostam and Arundelen, they never forgot you. Phew. This has been one long expedition. From here on out, I think I'll let the wind lead. Hey, everyone. It's been a mighty long time. I'm thrilled to see you all again. Welcome back, Grandmaster. Yeah. I'm home. Lupus Majoris. हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेस्ट है. It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. So, is there anything you'd like to talk about? Now's your chance before I get dragged off to the office.
डेफिनेटली यार, ये बहुत बढ़िया क्वेस्ट था, अब तक का सबसे बढ़िया स्टोरी क्वेस्ट। His sword was just a decoy. I carried his soul in my own heart. That was the plan I was most certain would work. The second half, though, using everyone's thoughts to guide me back out of the ley lines, I wasn't too sure that would work out. All jokes aside, what would you have done if the Traveler hadn't been able to separate the wolf spirit from Roland's influence? Initially, I was planning to have Barbados carry out that step. But when I approached him about it, he said there was a much more suitable candidate. The Outlander who caught the wind. Turns out our trust was not misplaced. Thank you. But what if I Then, failed? I guess we'd have had to get Barbados to send a wind to blow me back home. But it would have come at a heavy price. And with no guarantee of success. Besides, I'd rather not have him expend that kind of power. Invoking the power of an Archon. How steep a price are we talking? How steep? It's a good question. A glass of the finest dandelion wine, perhaps? No doubt I'd have to pay for it with a secret stash of cash in my office. You're dreaming if you think it would have come that cheap. It's been a while since I felt this wind on my face. वैसे Just how I मुझे remember. पता भी नहीं था रोस्ट So, is there anything you'd like to talk about? ना कि Now's your chance before I get dragged off to the office. या फिर बोरियस की स्टोरी। आई थिंक 3 बोरियस रह चुके हैं। फर्स्ट आई थिंक रोलैंड था, नहीं एंड्रियस था, और उसके बाद आई थिंक रोलैंड और रोस्टम आए, और ये अभी करंट अपना वार्का है, नाइट। इनकी मुझे लोड पता भी नहीं थी, अभी भी नहीं पता यार, कुछ समझ नहीं आया इतना अच्छे से। बट आई थिंक ये क्वेस्ट बहुत बढ़िया था। अगर मुझे वो लोड पता होते ना, दिस इज मज़ा आते इसमें और समझने में और खेलने में। ये सोच के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे लोअर नहीं पता। क्या बढ़िया क्वेस्ट और वो था इसमें स्टोरी। Well, with the shadow of Roland vanquished, the Wild Hunt won't be able to consolidate their forces for the foreseeable future. A few knights will remain on rotation at the Nodcry stronghold, but everyone else will be sent home in waves. Albedo and Duran will come back with the first wave, so you should have the chance to see them again soon. It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. मैंने पढ़ा नहीं यार ढंग से। Well, with the shadow of Roland vanquished, the Wild Hunt won't be able to consolidate their forces for the foreseeable future. Well, with the shadow of Roland vanquished, the Wild Hunt won't be able to consolidate their forces for the foreseeable future. ये कांडिया में आई थिंक अबिस की तरह करप्ट हो गया था। आई थिंक करप्टेड, आई थिंक अबिस ने कब्जा कर, क्या बोल रहा मैं, ये भी आई थिंक मॉन्स्टर बन गया था। तो ये नहीं था आई थिंक बोरियस, पर ये बनने वाला था, बस बन नहीं पाया। तो एंड्रियस, रोस्टम और वार्का, यही तीन आई थिंक बोरियस। Albedo and Duran will come back with the first wave, so you should have the chance to see them again. My future. Huh. You may already have learned of this from Barbados or the Hexen Circle, but I glimpsed a reflection of the future in Barbarloth's scryglass. और कुछ भी है उसमें? You saw an abyssal calamity in the north, right? Correct. Although, as things stand now, I believe we may have changed the course of the future, thanks in no small part to you. Still, after I've tied up some loose ends with the Knights of Favonius, I'll need to make another trip back north. There's still a lot of work to be done at the Nodcry stronghold. Besides, the first group of knights who volunteered to stay there have yet to be relieved of their duty. How could I simply abandon them? Ah, how noble. But be honest, your main
reason for going back to Notcry is so you can dump all your work here on Jean again, isn't it? अबे भाई, Wait, seriously? aren't you gonna say something in your defense? Don't just stand there crying. I'm only pulling your leg. You'll be seeing a lot more of me in Mondstadt from now on. It's been a while since I've felt this. All right then. I'm gonna stay here and enjoy the breeze for a little longer. For all the wine in the world, there's no feeling as intoxicating as the wind from your hometown after a long time away. और बाकी कैरेक्टर का घर चले गए, रुकते भाई, वारका आया है और वारका खुद गायब हो गया। हेलो वारका जी, ऊपर हो क्या? आई थिंक सो। हेलो वारका, वारका। ऐसा लग रहा वारका ऊपर है। अरे भाई छोड़ना। व्हाट इज दैट? क्या है भाई वहाँ? ओके अच्छा भाई, एक तो उन्होंने इतने एफर्ट डाले वारका के स्टोरी क्वेस्ट में, क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर ही है एक तरीके से वारका। आई थिंक दैट्स इट। अभी इंतजार करते हैं। अरे चलो इसे करते हैं, मैंने अभी तक नहीं करा। अब स्नेजनाया की स्ट्रीम का इंतजार करते हैं। अभी आई थिंक 1.5 घंटे अपने पे। बहुत टाइम है यार इसमें तो। लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। माइक को थोड़ा ऑफ कर दो, क्या इससे कुछ होगा? Light it up! Stay! Pyroclastic surge! Incinerate! Burn it down! Surge! Bring it! Light of the blazing sun! Leave it to me! मैं अभी अपना माइक ऑफ करके बोलने नहीं लगता। Wrath from the sky!
Light of the blazing sun! बस भाई मुझे और नहीं खेलना है। नेट नहीं चल रहा है। क्वालिटी कम कर दो क्या थोड़ी। Ad Astra Abbot. Thank you for Ad Astra Abbot. अब करेंगे हम लेने आकाश छोड़ क्वेस्ट। वैसे तो ड्यूरिन का भी अपन मैं आई डोंट नो उसे करूँगा ऑनलाइन। और ये दो क्वेस्ट में बहुत बोर हो गया था, मैंने तब से करे ही नहीं भाई। आधे अधूरे छोड़ रखे ये मैंने। ड्यूरिन का करूँगा पर मैं ऑफलाइन, और लेने आ कल करेंगे, या फिर शायद मैं लेने आ भी ऑफलाइन करूँ। अब बाकी टाइम क्या करना है? कब हो रही स्ट्रीम स्टार्ट? I better get me some alpacas. Once they've hauled everything over to Snezhnaya, make a little extra myself. 40 मिनट है लगभग। What's my temperature? मेरे नहीं लैपटॉप के। ठीक है। आई थिंक भाई मैं गेम क्विट करना चाहूँगा और कुछ और खेलते हैं। बस रुक जाओ।
बस CS2 खेलेंगे तब तक। तब तक क्या, एक मैच खेलेंगे बस। कैजुअल वैजुअल लगा लेंगे। कैजुअल तो नहीं यार, चलो कैजुअल ही लगाएंगे। बस म्यूट रखेंगे यार, लोगों को बहुत वक्त है। क्या भाई, फुल स्क्रीन विंडो करना होगा क्या? कैप्चर ही नहीं कर रहा। अब आया। तो भाई ऐसे क्यों नहीं हो सकता? सभी होना चाहिए सच में। अरे यार, इसलिए नहीं लगा था क्योंकि यहाँ भसड़ मची रहती है। फॉर सम रीज़न मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, बट कैप्चर हो रहा है। स्क्रीन लगी। इतना ज़्यादा डील है ना, फील कर पाऊँ। अरे अरे, बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई स्ट्रीम लैग क्यों मार गई? आई थिंक यही करना पड़ेगा। अब चल जाए। गेम क्या डील चल रही, मुझे खेलना ही नहीं है। हटाओ भाई हटाओ। पर ऐसा हो क्यों रहा? आई डोंट नो व्हाई।
इससे बढ़िया तो मैं जेंशिन इम्पैक्ट लगा लेता। आई थिंक मैंने जीपीयू बाउंड कर रखा है ना स्ट्रीम को, तो हो रहा है इससे फुल यूसेज जा रहा होगा। रुको करता हूँ अभी स्क्रीन शेयर। नए बने किरारा यहूदा नहीं चाहिए मुझे। कौन है? चलो बुलाते हैं, स्ट्रीम भेजूंगा उसे अपनी। अरे आ ही नहीं रहा, ऐसा ही होता है भाई। तीस मिनट और। आ जाओ भाई, मॉन्स्टर घूमते हैं, घर को घूमते हैं। भाई इधर डोन मैनपोर्ट, इधर अपना मॉन्स्टर। बढ़िया सीन दिया है।
1000 विंड ऑफ टेम्पल्स की डुप्लीकेट कॉपी लग रही है तो। इतना नीला पानी क्यों? ओह इट्स वेरी डीप। वैसे मॉन्स्टर भी तो आधा सबमर्ज्ड है ना पानी में। पाइलोस पीक जहाँ पे अपना एपिसोड आई थिंक पाइलोस पीक है वो सब पानी के अंदर है आधा पूरा। वे पॉइंट तो अनलॉक हो गया इससे करूँ नहीं यार। यहाँ पे क्वेस्ट है ना नया टेम्पल ऑफ स्पेस वाला वो भी करूँगा मैं इस पर। कहते हैं वो पहला वर्ल्ड क्वेस्ट होगा जिसे मैं आराम से खेलूँगा ना। मैं स्किप करता हूँ वर्ल्ड क्वेस्ट। अभी तो लोड नहीं पता वर्ल्ड लोड। मेंढक तो भाई मेंढक तो हाथ में ही नहीं आते। स्पॉन्डेड बड़ा उनका। वाह Target acquired. ओके Gather. कैसे करना पड़ेगा? Press the advantage. Stabilize. और कहाँ है? अरे Unsolicited, and all the more valuable for it. इतना ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं पर ये कई बार देते ही नहीं बिल्कुल। सबसे बढ़िया पता है क्या करते हैं? विंडराइज चलते हैं पुराने कट सीन देखते हैं। Outland who caught the wind। ये देखें वॉइस आ गई ना क्योंकि इनमें वापस पहले बिना वॉइस के खेल लेते हैं ये। क्या भाई पहले आर्कन को इसमें कोई कट सीन नहीं था क्या? आई थिंक सो था तो बट वेयर इज इट नाउ? आई डोंट नो। तो आई थिंक कैपिटानो वाला पता नहीं किसको वो क्या है? We'll never make it!
You've done well. Now come home. हाँ भाई ट्रैवलर के हाँ हाँ के लिए बस कट सीन देखा। पास्ट एंड फ्यूचर। अबे यहाँ से उसकी भी तो फाइट हुई थी कैपिटानो की, वो कहाँ है? चैप्टर 1 एक्ट 2। अबे कितने एक्ट थे? कैप्टन वेयर अबाउट्स कट सीन कहाँ है पर? ऐसा ना बोलना है वो कट सीन डाला ही नहीं तुमने। सच में डिसीजन। और यहाँ पे तो ट्रैवलर था ही नहीं। हम तब भी देखेंगे सिनेमा मजे लेने के लिए। The Archon of Natlan. A force to be reckoned with. The secret of the ley lines is no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us. Let our blades do the talking!
आई डोंट नो भाई, ये सीन मैं देख भी क्यों रहा। तो कुछ चलाना ही है तो सॉन्ग ऑफ द वल्कन मून का चलाओ। X6 जब हमने डोटोरे को मारा था। वल्कन मून होम कमिंग। Descending moon? What descending moon? It is pointless to fight on. You've already lost. Wrong. You can't win this, Dottore. What? My formula can get us 90% of the way. It will connect you to Columbina. Then, I will bring the formula's output to the Traveler's side. For the last 10%, do whatever it takes. Just bring the moon down. The moon will never be yours! I turn my body into moonlight and pour it over Nodcry. My soul I leave here to inform my future friends. Lastly, I will hide the Trilune Authority within the Frost Moon. And when my body, soul, and authority are reunited, finally... Columbina! It's been too long. I'm back.
क्या वीकली चैलेंज करूँ उससे बढ़िया। गो से यू या फिर छोड़ो यार, इस स्ट्रीम तो स्टार्ट होने वाली है, 9 मिनट बचे हैं। हेलो, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन कैप्चर नहीं हो रही है, पर स्क्रीन कैप्चर ऑफ रखो थोड़ी देर के लिए। ओके, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। From the day we were exploring Monster and we are now almost ready to set foot in Snezhnaya. Time flies so fast. सही में यार, कैसे टाइम निकल गया कुछ पता भी नहीं चला। Arrived before the 2020 game should be. We could not make it far to witness Snezhnaya today. हाँ यार, after 6 years, what a journey. We have come a long way. कितने सारे लोग होंगे जिन्हें आई थिंक स्नेशनाया की स्टोरी खेलने का मौका भी ना मिला हो। लोग तो होंगे यार ऐसे बहुत, जो बीच में क्विट कर दिया होगा बहुत सारे रीज़न की वजह से। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दिस इज गोना बी सो गॉडडैम एपिक। सिल्वर वुल्फ, भाई 67 क्या है, 67, आई डोंट नो, लेस देन 6 मिनट। मैं 5 मिनट बाद ही आता हूँ।
Hello, listen to my net. 30 people, 30k people are alive. भाई मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ, मेरी तो कोई स्ट्रीम भी नहीं देख रहा। मैं तो बस स्नैशनाया के लिए एक्साइटेड हूँ। Less than 1 minute. Oh no. What are you talking about? दो तोले। ओ कैपिटानो दिखा दो यहाँ पे। स्नैशनाया में कैपिटानो जिंदा। अरे वही दिखाएंगे वैसे ज़्यादातर, डेवलपमेंट कैसे करिए। कुछ खास नहीं होगा, आई डोंट थिंक। क्या पता ट्रेलर दिखाएं यार, जो आते हैं हर साल अपने चैप्टर इंटरल्यूड टीजर। फिर तो वही इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। अगर ना भी दिखाए तो वो बड़ी जल्दी आ जाएगा, आई थिंक इसी महीने या अगले महीने। मोस्ट ट्रेलर के लिए ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हर रीजन का एक ट्रेलर आता है। इंटरेस्टेड हो मतलब इंटरेस्टिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग हो इसलिए मैं स्ट्रीम करता हूँ। इसलिए नहीं कि लोग देखेंगे, पर मैं फालतू की बकवास करूँगा और इम्प्रूव करूँगा अपनी बोलने की कन्वर्सेशन स्किल। खुद की गलतियाँ ढूंढूंगा। रिफ्रेश। बहुत लाउड है। Let's go. Behind the scenes of Snezhnaya to Snezhnaya and the future. 去年这个时候，我们担心大家对于诺德卡莱还不算太了解，所以当时做了一期节目，从创作者的视角，跟大家分享了一些诺德卡莱的简单创作思路。不过比起诺德卡莱，我觉得大家对于至东的了解就要多很多了。比如说，至东是冰的国度，鱼人中的大本营，冒险家协会总部的所在地。尤其是在《空月之歌》版本的这一年中，相信旅行者已经充分感受到，提瓦特世界的局势目前可以说是暗流涌动。那相信大家对于未来下一个目的地至东的旅行也充满期待了。所以同事们找我来录这个节目的时候，我起初是有点困惑的，感觉大家早就认识过至东了。就是说，比起前瞻特别节目，现在这里算是一个前瞻的节目。那关于至东这个期盼已久的新国家，我们还有哪些可以和大家聊一聊的话题？至东这个国家，明面上是对我们过去承诺的这个提瓦特7国旅行的一个线性的延伸，但实际上呢，玩家的需求它并不是线性的，而是一直在升级，一直在渴望有新的、更有创意的设计。所以我们要做的其实是既要保持《原神》这个作品的一个亲切感，
和代入感，让旅行成为生活的一部分。又要不断的去尝试这种新鲜的、令人惊喜的体验方式，让这种旅行可以沉淀情绪持续的去具备意义。这个事情说起来很轻松啊，但实际做的过程当中还是有不少需要推敲的地方的。所以今天我们就可以聊一聊这里面的门道。I can hear the train. I can hear the Snezhnaya music in background. Nice. What is your impression of Snezhnaya? 早年的志东如果要给他提炼出一种轮廓的话，那多半是以一个比较邪恶威胁性很强的这样一个形象出场。然而6年过去了，旅行者们慢慢意识到，志东这个国家它有着自己对于命运的一个抗争路线，只是这个路线呢，在很多场合下，它体现出了一种对其他势力的排他性，甚至可以说在7国之中，志东是那个站在抗争命运最前线、最主动也最坚定的一个国家。一个想要与天理和命运抗争的国度，它肯定要具备与之匹配的实力，而志东确实是具备这样实力的。比如遍布提瓦特各国的愚人众组织，大家见过的诺德卡莱的巨大研究设施，都彰显出志东强大的工业与科技实力。除了这些大家比较熟悉的内容，在志东本土还有着一个历史悠久、实力强大而又神秘的种族——妖精。我们在诺德卡莱见过的伙伴菲林斯、利奈亚，都属于这一古老的种族，而他们的诞生最早可以追溯到古国亥珀波瑞亚。这个国家的诞生与毁灭，其实都和天理、天使、降临者有着千丝万缕的联系。他们之间的故事，我们在以往的版本中是有过少量提及的，比如双月之子收藏的中北岛歌集，也就是被玩家们戏称为诺德卡莱的日月前世。而在志东上面提到的这些势力，他们之间的过去和未来，还会被进一步的揭示。大家都知道从1.0版本开始，志东就在为某个神秘的目的派遣愚人众的执行官前往各国去收集神之心。那截止目前呢，除了火神之心以外志东已经收集到了其余的6枚神之心。并且比较有意思的一个点就是大家都知道，这其中有不少国家的神明各自出于一些理由，把自己的神之心以一个很小的代价交给了志东的使节。那我们也看到社区里有很多旅行者非常积极的去讨论这些神明背后的考量对于这些神明而言，就好像是让志东女皇拿到自己的神之心是一个对提瓦特更有利的选择。那这背后的原因呢，也会在志东这一年向大家讲述清楚。原神有一个重要的设计原则，就是既需要有亲切感，又需要有奇幻感。比起1比1的还原某个现实的国家或者地区，我们会选择提炼来自不同背景而且又彼此联系的各种文化要素，把它们以一种自洽的方式重新组合在一起。大体上，志东是处于一个比较冷的、极寒的这种自然环境下的，它类似于现实生活当中的东欧，还有近北极圈地区。那这个地方的家园其实是人们在冰雪的夹缝当中，通过火焰和钢铁开辟出来的。因此，我们也化用了不少现实世界当中对应地区的这个文明特征。但是在此基础上呢，针对这些现实的人文痕迹，我们其实也做了很多提瓦特自己特有的奇幻的演绎比如说到这个雪国至东那旅行者可能就会想到一部经典的电影叫《雪国列车》或者说一个游戏系列作品叫做《地铁》或者叫 Metro。那这就是一种冻土地区特有的工业和人文符号。那有没有一种可能就是原神当中这个列车的车厢，它本身也可以是一种人文的呈现呢？比方说它可以拿来用作营地，甚至拿来去搭一个剧院，对吧？有点像是在废弃工坊里面搭设的那个北京的798，也可能像是《生化危机》当中从博物馆改造来的这个警察局。那这种人文要素跟实际的用途之间的一种交错感，那在我们看来也会构成一种比较有意思的设计。提到列车，在游戏中它通常被视为一种载具，但在如此大规模的地图里面，载具应当遵循怎样的运行规则？车厢内部的空间又能承载哪些玩法？或者说它的定位可不可以不只是移动工具？这些都是我们在设计阶段需要反复讨论和探索的问题。在枫丹，我们曾设计过巡轨船，由于船体规模较小，运行在相对简单的轨道系统中，主要关注质心的稳定性和基础转向的移动即可。
但像火车这样由多个车厢组成的复杂结构体，在几何结构和运动模拟上的处理就要复杂得多。在联机环境下，状态同步和角色交互的设计难度也会显著提升。同时，为了保证整体的真实感，不同轨道之间的调度策略、车辆与环境之间的交互，以及车厢内外之间的场景切换，都是需要系统性梳理和深入研究的课题。当然，对于以上这些问题，大家永远都可以相信原神的技术团队，我们基本都已经解决得差不多了。那不仅是风景啊，音乐其实也是大家非常关注的一部分。那至东的文化原型呢，就包含了有古典交响乐，其中还有承载了一些国家漫长抗争史的严肃音乐，以及还有一些广泛分布于斯拉夫各国的这个民乐。那在过去啊，Hoyo Mix 的小伙伴已经努力的给旅行者们重现过有巴洛克，还有古典主义的曲风。而在至东呢，旅行者或许还能够听到宏大深沉的现代主义，还有一些奇幻如魔法般的浪漫主义作品。至东的玩法嘛，这个话题肯定基哥有更多可以讲的。我注意到了一件事，我们这些年对外的宣传都宣称自己是开放世界冒险游戏，但实际上用开放世界这4个字拿来定义原神有点狭隘了。比如什么叫开放世界？地图做得大，角色跑得快，内容堆得多，算开放吗？我觉得这些都太过片面了。原神的本质乐趣应该是不同维度的原子化玩法相互叠加、相互作用的结果。在地图里率性的探索，和怪物战斗，了解 NPC 的故事，各种简单直观但是代入感很强的体验，都可以根据旅行者的需要自由实现。我们觉得这才是原神玩法最有趣的地方。要我用一个词来定义原神的玩法概念的话，我觉得应该是交互吧。我们用尽可能精简的交互行为啊，足够明确的交互协议，去呈现了很多丰富有趣的交互反馈。有个冷知识啊，就是原神的元素反应以及各种移动模组的这个设计，是早在我们的策略对抗和数值规划之前就已经确立好的。所以他们的初衷其实都是为了玩法交互去提供一些原子化的、符合直觉的、容易理解的这个协议框架。就比如说，我手上有个火元素，我拿去碰一下水元素，是不是会冒烟？拿去碰一下草元素，是不是会烧起来？前面有座山，这个山看上去呢不算高，那是不是可以爬上去？那爬上去之后呢，山上有个鸟窝，鸟窝里能掏出几个禽蛋，那这些蛋是不是可以拿来做菜？旅行者其实是在诸如此类的这种尝试和验证当中不断的去积累一种简单的快乐，然后呢，潜移默化的去理解这个游戏后续的玩法当中需要用到的知识。我们在前期其实花了有1年多的时间努力的让这种根源性质的乐趣尽可能广泛的分布到这个游戏的各个内容模块上，让它去贯穿有生态、人文、战斗和探索这几个领域。原神的世界在玩法层面的这种立体感和鲜活感，其实是建立在这些比较细腻乃至于很琐碎的这种小乐趣上面的。原子化玩法其实是一种不可再生资源，就是所谓的做一块少一块。那到了第6年，设计上可以突破的空间也就越来越小，对于我们概念设计能力的要求也就越来越高了。举个例子，比如说冰元素，我们可以赋予它封存的概念。那如果它封存了能量，它就可以看作是某种电池；那它封存了记忆，那就可以看作某种信息存储和在线的介质。当然，策划的脑洞肯定比我说的还要夸张。那比如说万一冰元素封存了某种古代禁忌的力量或者概念然后把它藏了起来，那旅行者可以借用某些手段呢，激活这些力量或者概念来获得一些收益。这个好像说的有点多了。用策划的专业术语来说，就是预期大家能够通过相似的交互协议，让统一的交互行为呈现更丰富的结果。在过去的旅途当中大家遇到的大部分的敌人其实都是那种各自为战的，他们之间呢也没有太多配合。那至东的愚人众既然在设定上它是一个高度组织化、军事化的一个势力，那么它应该在战斗当中呢也应该是有分工配合、互相掩护的。所以在至东版本，我们也尝试让敌人的行为更加的有组织纪律了。一方面呢去增加一些生动性，另外一方面呢也能提供一些有趣的对抗策略。利用元素反应或者利用单个元素的特性是原神一直以来非常重要的玩法。在至东的战斗中，大家也可以进一步的利用冰这个元素，让它不只能够触发元素反应，还能够破坏、碎裂，甚至改变战场地形，影响敌人的行动路线，
这意味着战斗不只发生在怪物和角色之间，而是发生在怪物、角色以及整个环境之间。至东的很多玩法设计啊，会围绕着超越规则这个主题来做。那这个主题一方面指的是原神本身啊，比如说一些元素反应会在这个版本有全新的演绎啊，他们甚至在至东地区的探索和剧情当中都起到了重要的作用。另一方面呢，也是指我们团队正在探索和超越现在这个原神的可能性啊，就比如说旅行者他作为降临者啊，他可以在一个特殊的区域里体验到一套和原神原本截然不同的新玩法。那大家可以尽情的想象啊，只有降临者能够做到的事，可能会比当初大家见到在枫丹的那种水下体验还要更加意外吧。我们上线已经是2020年的事情了，那时至今日啊，可能在很多玩家的眼里啊，原神已经是一个老游戏了。那玩游戏一定要赶时髦嘛，要玩最新的嘛，这是人之常情。所以我们在创作更多内容的同时，也会关注如今的玩家喜欢什么东西，就让大家感知到原神其实是在与时俱进的。那早些年呢，我们通过一些简单的天赋设计来反映了角色自身的身份、职业和性格特点。到了诺德卡莱这一年我们让角色们和世界有了更多的这种生态啊、人文性质的互动。而接下来呢，在至东这个版本，我们就会去尝试让一个角色的身份特色在游戏里得到更多的体现。就比如说如果说有一个角色他的职业是比方说歌手那在原神里面，我们不仅能够观赏到一个歌手的演出体验到这个歌手他华丽的技能表现甚至是不是可以通过某种可以游玩的方式在游戏内听到他哼唱各种动听的歌曲呢？我们看到很多玩家非常在意原神的画面和渲染效果的提升，得益于这些年大家设备的升级换代，未来我们会在新角色身上做重大的视觉升级，在保留原神原有的风格的前提下，让游戏内的角色呈现更加具有高级感。届时大家会有非常明显的视觉感官优化。我们做内部测试的时候，有同学就惊呼：“哇，这把我干哪了？这还是原神吗？”但是话又说回来，作为一款卡通渲染风格的游戏，许多光影效果和纹理细节都是我们美术同学手动调节甚至手动绘制完成的。如果盲目向写实风格的游戏作品看齐，贸然的堆细节加精度，会导致游戏画面显得杂乱，失去视觉焦点，也不够温暖和梦幻，破坏沉浸感。而且贸然大幅升级，往往意味着放弃低端乃至中端配置的玩家，其实是不合理的。毕竟我们不能为了一厢情愿的技术追求，不顾大多数玩家的游戏体验。原神以往的演出和玩法，它大体上都是分开的，那大家只能体验到演出有进步，却很难去玩到这个生动的玩法。所以这几年我们一直致力于让游玩和演出的部分融合到一块儿。就比如说 5.3 版本的这个古斯托特的 BOSS 战还有月之4版本的这个博士的剧情战，对吧？还有月之5版本的这个法尔加的地脉战等等等等。那在至东的这一年我们会让更多的游戏内容尽可能的就具备上述这几场战斗这种演出般的效果。不仅如此我们还会统一一部分 NPC 和怪物的行为。举例来讲比如说有些他巡逻的卫兵会加入一些突发的战斗，那有一些被击败的敌人呢，他也有可能解锁隐藏的剧情。在至东旅行者还会获得一种妙妙工具不同于过去这种比较单一的小道具功能这个工具会赋予旅行者去改造我们环境的能力甚至可以跟其他的旅行者去通过某些方式共享这种改造的效果，就让大家能够按照自己的想法去体验和优化原神的世界。ending by end हो गया。原神的未来不对，这期我是不是看过去年我是不是也在这个问题上想了一下，感觉有点诡异说回正题就是很多人会觉得就是我玩原神玩到今年，我就是为了看到至东完结但是完结这个词其实很伤感，它意味着就是读者对于作者迄今为止的作品的认可，但是呢它同时又封印了这个作品未来一切的可能性。
我们都知道啊，伟大的故事女巫，对吧？野猪公主的作者，希莫兰卡的缔造者，小杜林的母亲魔女 M， 对吧？安德斯多特女士，啊，她曾经在剧情里说过一句话，叫做每个故事最大的遗憾，便是要有一个结局。那对于我，或者说对于我们团队啊，以及很多旅行者而言，我觉得《原神》它已经不是一个故事了，就《原神》它其实是生活的一部分。Yes。那至少我是没有办法想象说这部分生活从我的世界当中被剥离开的，所以大家可以放心啊，我们既不会去强行的给这个故事画上一个莫名其妙的句号，也不会说为了一个很功利的理由啊，强行给他一个给这个篇章去续命。我们觉得旅途是有它的意义的，那过去是，现在是，未来也是。那作为一个产品呢，其实进化同样也是永恒的课题。那为了进化，这几年其实我们一直在积极的去和来自世界各地的游戏设计一线的很多前辈们去交流。我们就发现所有的经典的游戏作品啊，大家其实都有类似的困难。那遇到困难的时候呢，解决的方案也都是事必躬亲。比如说《最终幻想7》重置版，那它的故事内容非常的丰富，所以团队花了非常大的力气，让每一部作品入坑的玩家都可以很快速的理解剧情，能够上手。死亡搁浅2，它的地图比较错综复杂，那其实是小岛秀夫先生他自己一遍一遍的跑自己的游戏地图，然后呢让团队逐个的去把这些地图调整至车辆可行，最终实现了一个玩家用载具的时候，在任何一个地形都可以畅通无阻的行驶的这样一种自然的体验。那有的前辈呢，他为了多平台性能的考量，放弃了使用内存负担非常大的这种商用的扫描素材，就带着自己的团队纯手工去调整很多写实风格的雪山和溪流。那诸如此类的一些例子啊，就是当我们知道在产品进化的这个道路上，我们跟世界顶尖团队的这个路径其实比较类似的时候，就突然变得比较有信心了。而从至东开始，原神的进化要开始加速了。这种加速会在未来某些节点兑现，并且如原神提瓦特篇上线时一样，我们为这个行业带来了一些重要的想法参考和思路改变。我们有能力在2020年给这个世界带来惊喜，那么在5年后、10年后、20年后，我们仍然有这个能力做到。我们始终相信，一个真正打动人的作品，从来不是靠一时的风潮。原神能走到今天，靠的是一群人日复一日的坚持与创新，和千万旅行者们一路走来的陪伴。IP 之所以能成为 IP， 靠的是高品质的内容设计与长时间的持续产出。在至东，我们将继续秉承这样的理念，把更多激动人心的想象，变成玩家可见、可玩、可感的全新体验。Snezhnaya 2026 08 फंड ओके, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। I think less than 4 months. This is the end. अभी 6.6 आएगा, फिर आई थिंक 6.7 आ रहा है, एंड फिर स्नेजनाया डायरेक्ट 7.0, नो 6.8. September 8, January, February, March, April, May, June, July, August. I think August though. The end. Okay. Let's 所以在至东版本， revisit. 我们也尝试让敌人的行为更加的有组织纪律了。一方面呢，去增加一些生动性，有能够做到的事。 बढ़िया लग रही है।
बट रेवलर को पहनाओ तो न्यू स्टोरी में तो वो पहन ही रहे ना अपने न्यू आउटफिट 新玩法，那大家可以尽情的想象啊，只有降临者能够做到的事，可能会比当初大家见到在枫丹的那种水下体验还要更加意外吧。去改造我们环境的能力，甚至可以跟具不同于过去这种比较单一的小道具功能啊，这个工具会赋予旅行者去改造我们环境的能力，甚至可以跟其他的工具会赋予旅行者去改造我们环境的能力，甚至可以跟其他的旅行者去通过某些方式共享这种改造的效果，就让大家能真正打动人的作品，从来不是靠一时的风潮。原神能走到今天，靠的是一群人日复一日的坚持与创新，和千万旅行者们一路走来的陪伴。IP 之所以能成为 IP， 靠的是高品质的内容设计与长时间的持续产出。在至东，我们将继续秉承这样。This is Snezhnaya। I think ये मेन सिटी होगी, बढ़िया है। एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेन है और भी होंगे लोकल ट्रांसपोर्टेशन कुछ। 早年的至东啊，如果要给它提炼出一种轮廓的话，那多半是以一个比较邪恶威胁性很强的这样一个形象出场。然而6年过去了，旅行者们慢慢意识到，至东这个国家啊，它有着就比如说旅行。That's it, I think。अब स्नेशनाया के चैप्टर का इंतजार है जब वो रिलीज होगा ट्रेलर。届时，大家会有非常明显的视觉感官优化。尝试让一个角色的身份特色在游戏列示得到在至东这个版本有种呢角色有美术作品的杂乱。वो न्यू कैरेक्टर डिजाइन आई थिंक लिनिया के स्टोरी को इसमें एक एनपीसी है जो ओके यार क्या ही और क्या करेंगे। द एंड बाय बाय लेट्स गो। 12 अगस्त को रिलीज हो रहा है स्नेशनाया। स्ट्रीम तो उससे पहले ही हो जाएगी। ओके